Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 6 subject science chapter 1 cellular organization of plants and animals book exercise and I am your science teacher Saman. Your books page number 11. In today's class we will do our book exercises. Our first exercise is fill the circle ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए, उसमें हमने करेक्ट ऑप्शन को इनसर्कल करना है. एंड नाउ होल्ड योर पेंसिल्स एंड सॉल्व द एक्सरसाइज विद मी. नंबर फर्स्ट, अली वॉन्ट्स टू होल्ड द माइक्रोस्कोप इन हिज हैंड. विच पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप विल ही होल्ड. अली माइक्रोस्कोप को पकड़ना चाहता है, तो वो कौन से पार्ट से पकड़ेगा. ऑप्शंस आर आर्म, nose piece, base, stage. The correct option is arm. Number second, while observing through microscope, this cell has a transparent layer around its body. जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ये वाले सेल के इर्द गिर्द एक ट्रांसपेरेंट लेयर नज़र आएगी. तो वो कौन सा सेल होगा. ऑप्शंस आर नर्व सेल, ब्लड सेल, फैट सेल, कार्टिलेज सेल. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फैट सेल. नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द करेक्ट सोर्स ऑफ कार्टिलेज सेल. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हम कार्टिलेज सेल में उसको ले सकते हैं. ऑप्शंस आर एल्बो, नर्व, हार्ट, स्किन. द करेक्ट ऑप्शन इज एल्बो. नंबर 4, राइबोसोम्स आर अटैच विथ. राइबोसोम्स किसके साथ अटैच होते हैं. ऑप्शंस आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, smooth endoplasmic reticulum. The correct option is rough endoplasmic reticulum. Number 5, choose the correct function of plastids. इनमें से कौन सा फंक्शन प्लास्टिड का करेक्ट है. ऑप्शंस आर अपटेक ऑफ वाटर, प्रोडक्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ प्लांट फूड. द करेक्ट ऑप्शन इज स्टोरेज ऑफ प्लांट फूड. Now turn to page number 17. Our next book exercise is fill the circle of the correct option against each statement. यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन है. 4 में से हमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हम फिल करेंगे. नंबर फर्स्ट, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट पोजेज सेल एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल साइड इज. वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन से ऑर्गेनिज्म का टाइप है जिसकी पूरी बॉडी एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो. ऑप्शंस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स. द करेक्ट ऑप्शन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. नंबर 2, ऑर्गन दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. वो कौन सा ऑर्गन है जो डाइजेशन में हेल्प करता है. ऑप्शंस आर यूट्रस, हार्ट, एसोफेगस, ट्रैकिया. द करेक्ट ऑप्शन इज एसोफेगस. नंबर 3, दिस इज नॉट अ ह्यूमन टिश्यू. इनमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ह्यूमन टिश्यू नहीं है. द ऑप्शंस आर कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज वस्कुलर टिश्यू. नंबर 4, दिस सब्सटेंस इज बैलेंस थ्रू किडनीज. किडनीज क्या बैलेंस करती है, कौन सा सब्सटेंस बैलेंस करती है. द ऑप्शंस आर वाटर इन द बॉडी, ऑक्सीजन इन द बॉडी, ब्लड इन द बॉडी, energy in the body. The correct option is water in the body. Number 5, any remaining human waste product after digestion are stored in. डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है वो ह्यूमन बॉडी में किस ऑर्गन में स्टोर होता है. द ऑप्शंस आर रेक्टम, यूट्रिया, किडनी, एनस. द करेक्ट ऑप्शन इज रेक्टम. रिव्यू एक्सरसाइज. फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. इसमें भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को फिल करना होगा. नंबर फर्स्ट, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज़ द वर्ड सेला डिराइव. कौन से लैंग्वेज ज़ुबान से सेला वर्ड डिराइव हुआ है. ऑप्शंस आर लैटिन, इंग्लिश, ग्रीक, इटालियन. द करेक्ट ऑप्शन इज लैटिन. Number 2, you are provided with a white blood cell sample. What shape will you observe of the sample? हमें white blood cell के sample दिया गया है, तो हमें उसका कैसा shape नज़र आएगा. The option are round, globular, cylinder, square. The correct option is round. Number 3, which cells are used in the composition of brain, lungs, skin and heart.
ब्रेन में और लंग्स, स्किन, हार्ट में कौन सा सेल यूज़ हुआ होता है, उनमें कौन सा सेल का कॉम्पोजिशन होता है? करेक्ट ऑप्शंस आर एपिथेलियल सेल्स, बोन सेल्स, endothelial cells, cartilage cells. The correct option is endothelial cells. Now turn to page number 18. Number 4, the product of sebaceous gland is, sebaceous gland कौन सा product secrete करता है? The options are water, insulin, oil, saliva. The correct option is oil. Number 5, which of the following is a plant cell? इनमें से कौन सा plant cell है? The options are cardiac muscle cell, sclerenchyma cell, sebaceous gland cell, osteocytes. The correct option is sclerenchyma cell. Number 6, what is the scientific terminology used for the study of tissues? टिश्यू की स्टडी के लिए कौन सा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज होता है? द ऑप्शंस आर हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, टिश्यू बायोलॉजी. द करेक्ट ऑप्शन इज हिस्टोलॉजी. नंबर 7, विच सिस्टम शोज पॉजिटिव ग्रोथ टूवर्ड्स ग्रेविटी? प्लांट का वो कौन सा सिस्टम है जो पॉजिटिव ग्रोथ करता है ग्रेविटी की तरफ? द ऑप्शंस आर शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डिक सिस्टम. The correct option is shoot system. Number 8, the main organ in the human nervous system is, human nervous system का main कौन सा organ है? The options are neurons, spinal cord, cerebellum, axons. The correct option is spinal cord. Number 9, bacteria, amoeba, mushroom, sunflower and human are examples of which hierarchy level? लेवल के ऑर्गेनाइजेशन लेवल के मुताबिक बैक्टीरिया, अमीबा, मशरूम और सनफ्लावर एंड ह्यूमन किस लेवल में आते हैं? द ऑप्शंस आर टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गेनिजम्स. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑर्गेनिजम्स. नंबर 10, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, सबसे छोटा यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा है? द ऑप्शंस आर फेरिंग्स, लैरिंग्स, एल्वोलाई, ब्रोंकाई. The correct option is alveoli. This is the end of book exercises of chapter number 1. Open your copies, write date and serial number on each and every page. Draw margin line on the right side of the page. Use blue marker for the heading and blue ink pen for the rest of the work. Now give heading of alphabets in capital letter. Then start writing letters from A to Z. Then draw finishing line. Turn the page, give heading of small letters and start writing small letter from A to Z. Then draw finishing line as shown in this video. After that, on next page, write sky letters, grass letters, root letters and draw finishing line after each and every letters. These contents are in your midterm syllabus. They are categorized into biology, chemistry, physics. In biology, there are 2 chapters. Number 1 is cellular organization of plants and animals. Number 2, sense organs. In chemistry, first chapter is atoms, molecules, mixtures, compounds. In physics, we have 2 chapters. Number 1 is energy and its forms. Number 2, forces and machines. Then on next page, give heading of biology with blue marker. On next page, write chapter number 1, cellular organization of plants and animals with blue marker. Then give heading of contents. Number 1, words meaning 8. Number 2, short question answers 4. Number 3, long question answers 2. Then we have exercises. In exercises we have number 1, fill in the blanks 6. Number 2, true false 6. Number 3, match the columns 5. Chapter 1, cellular organization of plants and animals. Words, meanings. Number 1 is magnification, बड़ा चढ़ा कर दिखाना. Number 2, transparent, साफ शफाफ. Number 3, organelles, खुलिए के हिस्से.
Number 4, diffuse, बिखरा हुआ. Number 5, specimen, मिसाल. Number 6, intensity, शिद्दत, ज़्यादती. Number 7, distinct, वाज़े. Number 8, स्टॉक, अंबार लगाना. Short question answers. Question number 1, define organelles. What is powerhouse of cell? Answer is, each cell has numerous subcellular structures called organelles. Mitochondria is the powerhouse of the cell that provides energy to the cell. Question number 2, define multicellular and unicellular organisms with examples. Answer, unicellular organisms. The body of unicellular organisms are formed of single cell, for example amoeba. Multicellular organisms. The body of multicellular organisms are formed of multiple cells, for example human beings, plants. Question number 3, what are the two main parts of nervous system? Answer, the main parts of nervous system are, number 1, central nervous system consists of brain and spinal cord. Number 2, peripheral nervous system consists of all nerves in our body. Question number 4, xylem and phloem are transport tissues. Justify. Answer, xylem and phloem are transport tissues. Xylem transport water from roots to all parts of the plant. Phloem transport food from leaves to all part of the plant. On next page, give heading of long question answers with blue marker. Question number 1, differentiate between animal and plant cell. Draw a line in the middle of your page, then give heading of animal cell on one side and plant cell on another side with blue marker. Number 1, animal cells are generally small, plant cells are generally large. Number 2, animal cells range from 10 to 30 micrometers in length. Plant cells range from 10 to 100 micrometer in length. Number 3, animal cells do not have a cell wall but have a cell membrane. Plant cells have a cell wall composed of cellulose as well as a cell membrane. Number 4, animal cells contain centrioles for cell division. Plant cells do not have centrioles. Number 5, animal cells do not have plastids. Plant cells contain plastids which are needed for photosynthesis. With long question number 1, you have to draw the diagram of animal cell and plant cell with proper labeling. As you can see on this page, these diagrams are also mentioned in your book on page number 8 and 9. Question number 2, write a note on the following topics. Number A, root system in plants. Number B, shoot system in plants. Answer, root system. Number 1, the root system includes those parts of the plant that are present below the ground, that is primary and secondary roots. Number 2, roots help the plant to fix itself to the soil as well as absorb water and minerals from the soil. Number 3, root system grows positively towards the gravity and negatively towards light. Then you have to draw this diagram of plant root system that is also mentioned in your science book. B, shoot system. Number 1, the shoot system includes those parts of the plant that are present above the ground. Number 2, it includes the organs such as leaves, buds, stems, flowers and fruits. Number 3, shoot system grows positively towards light and negatively towards gravity. And you have to draw this diagram of plant shoot system that is also mentioned in your science book on page number 13 and 14. On next page, give heading of exercises with blue marker. Our first exercise is A, fill in the blanks. Number 1, ribosomes are attached with endoplasmic reticulum. Number 2, organ that helps in the digestion of food is esophagus.
Number 3, salt in the body is balanced through kidneys. Number 4, the main organ in the human nervous system is spinal cord. Number 5, cytoplasm is the jelly-like fluid inside the cell. Number 6, the product of sebaceous gland is oil. Our next exercise is of true false. Number 1, shoot system shows positive growth towards gravity. False. Number 2, sclerenchyma cell is a plant cell. True. Number 3, plant foods are stored in plastids. True. Number 4, similar organs join together to form tissues. False. Number 5, the excretory system is where liquid waste is eliminated as urine. True. Number 6, larynx is the smallest unit of respiratory system. False. Our next exercise is of match the columns. Draw a line at the center of your page. Give heading of column A on one side and column B on another side with blue marker, and column D are your correct answers. Number 1, chloroplast. Correct option in column B is chlorophyll. Number 2, ribosomes, protein. Number 3, central nervous system, brain. Number 4, microscope, magnification. Number 5, organ, heart. Draw finishing line at the end of each exercise. This is the end of our first chapter. Hope you have learned. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.